past days, we have explored a wide range of topics: curriculum design, interdisciplinary learning, skill development, assessment reform, and student centric approaches, all essential to implement the NEP in a meaningful way. Today, we continue to build up on that foundation with even more insight and practical approaches that will help us shape the future of education in our institution. The importance of this orientation program cannot be overstated. As educator, policymaker, and stakeholder, this is our responsibility to ensure that the core principle of NEP 2020, such as flexibility, inclusivity, equity, and excellence, are not just understood but actively practiced in our respective roles. This program is designed not only to raise awareness but also to empower each one of us to be proactive agents of this much needed educational reform. I encourage you to ask questions, share your insight, and active participate in today's discussion. Let us make the most of this opportunity to deepen our understanding and pave the way for positive change in our education system. With that, I once again welcome all of you to today's session. Let's continue working together to create an educational system that nurture, empower, and prepare learners for bright future. Thank you, and let's have a great session ahead. For that, I would like to hand over this session to Dr. Satish Singh Yadav, today's organizing coordinator and head department of sociology, Government Degrees Resource Person. Dr. Satish Singh Yadav, sir, please join us. Okay, thank you, ma'am. Please, sir. It is a great honor to introduce our distinguished resource person for today's event, Dr. Bhavna Sharma, Associate Professor at the PG Center Department of Political Science, Himachal Pradesh University, Shimla. With over 15 years of teaching experience, Dr. Sharma has carved a niche for herself in the field of international relations and ancient Indian political thought. She holds a PhD on India and European Union spectrum of relations and has guided numerous scholars with 11 PhD and MPhil students already under her mentorship and several more currently pursuing their research. Dr. Sharma's contribution extend beyond academics. She holds key administrative roles within the university, including serving This meeting is being recorded. on PG Board of Studies, the Faculty of Social Sciences, and as the coordinator for several important campaigns like Drug De-Addiction Initiative. Additionally, she is an active reviewer for prominent journal and has served on editorial board of UGC listed Indian Journal of Academic achievements are reflected in her numerous publications with 29 research paper and book to her name. She has presented her work at multiple national and international conferences and is a frequent contributor to newspaper and programs on DD. Accolades Dr. Sharma has recognized with the UGC Postdoctoral Fellowship, Associate of Advanced Study Shimla, and the IPSA Young Political Scientist Award 2021. Please join me in welcoming Dr. Bhavna Sharma as we look forward to her valuable insights and expertise today. Today's topic for her presentation is on student diversity and inclusive education. Let's welcoming Dr. Bhavna Sharma. Dr. Bhavna Sharma, please join us for delivering today's lecture on student diversity and inclusive education. Thank you, sir. Thank you so much for the kind introduction. But I think just few minutes
back. The previous lecture was finished, I think. Is it? No, ma'am. This is our first lecture, ma'am. Okay. So shall I start now? I would like to share my screen first. Yes, ma'am, definitely. Okay, just a minute. Mhm. I think it's visible. Yes, ma'am. Before I start, I want to take a moment. First of all, greetings, Sharma, and uh, thank you for your time. I would like to say that welcome in this teaching fraternity. And here I am today delivering my talk on student diversity and inclusive education strategies. Okay, so I will start and I'll minimize it. Now the question, before I start, I would like to say something that the time has changed, and when we talk about education, then the question arises that why education, and education is for what? So education is the source of gradually cultivating wisdom, and since time immemorial, education, since the dawn of civilization, education is of highest value. Education is not concerned only with the cultivation of skills or collection of information or news communicated by someone else, but it is related to the cultivation of wisdom rather than sharing of information. And education is considered as a fitness to face the challenges of different stages of life. It means it is perceived that an educated person is having more democratic values in his thinking and in his behavior. So education provides the fitness to face the challenges of different stages of life. As we all know that nothing in this world is static, everything keeps on changing. In the same way, we grow with the time, with the passage of time, we face different challenges, and educated people is believed to be more accommodatable or more comfortable with the challenges of different stages of life rather than those who are not having that kind of education. Now, education is the backbone of cultivating democratic values for a harmonious and a peaceful living. And Mahatma Gandhi, regarding this, has said that education is to cultivate Swaraj within human individual. It means the educated person thinks what is right in a better way, or educated person is able to think his or her own what I can say, what the purpose of life in this society. So education is an important aspect. Vivekananda has said that we want education by which character is formed, strength of mind is increased, and the intellect is expanded, and by which one can stand on one's own feet. But now a time we observe that we face different kind of challenges in a society, and sometimes it appears in a society that the educated person is someone who is having degrees but is not so fit to face the challenges of different stages of life. Now the question arises, education with value or without value, that is also an important aspect. Higher education
When we talk about higher education, then it is perceived that higher education is research oriented. Research oriented means the individual should have more imaginative power, more comparative power, more critical power, and more investigating power. And when we see the Indian education system or the Indian higher education system, then the Indian higher education system is the third largest system in the world. And this is second largest system in the world, not the third. Second largest system after China. The first largest system is of China, and the second largest system is of India. So Indian higher education system is not only the second largest system in the world, but it is not only large as well, but complex body. I'm saying, or I'm using the word that Indian higher education system is not only large but complex, because this growth is accompanied by increasing student diversity, means it reflects an increasing share of students from socially and economically disadvantaged groups. Means in that situation, when we are working in a system which is large as well as complex, so the question arises that how to do inclusive education, or what inclusive education means. So according to Ministry of Education, in 2020, 57% of students come from disadvantaged group. So it is very relevant or pertinent that how to make those students uh, fit themselves so that they can get education, so that they can grow in their way, promote democratic values, and the society will be more harmonious and the more peaceful. So education is to cultivate Swaraj within the human individual, what the Gandhi has said. And as per the quotation of the Vivekanand, Swami Vivekananda has said that we want education by which the character is formed, the strength of mind is increased, and the intellect is expanded, and by which one can stand on one's own feet. The same thing, in other words, was said by the Albert Einstein, that education is what remains after one has forgotten what one has learned in the school. So this all creates the great uh, difference between the ancient education system and the modern education system, and the role of a teacher become very important in this scenario. The role of a teacher is so important that the teacher is the catalyst of social transformation, because in the before independence, during freedom movement, we also have observed that teachers played great role in that times. And in the same way, in the present contemporary scenario, when our higher education system is a large body, a complex body, we have more than 57% students from disadvantaged group. So in this scenario, the teacher's role become very, very important. And it is believed that teacher is the catalyst of social transformation, marginalized section of the society. And and make the minds and reasoning power of the students charged with curiosity and queries that help in inspire their ideas to new achievements in knowledge and culture. It means a good teacher
ignite the minds of the students so that the question arises in their mind and they indulge themselves in searching answer to those questions. So that's why it is said that the teacher should not forget ABC for that, first of all, because a well learned, a well balanced, well spiritually grown, as well as read teacher can bring the change in the society or can act as a catalyst for social transformation in a better way. So the teacher should not forget ABC. What I want to convey through this acronym ABC means ability and behavior, and there should be no difference in practice and preaching of a teacher. What the teacher is practicing or the preaching, there should not be a gap. So what we teach them, if we tell them to follow the path of academic integrity, but if we ourselves are not following, then it will create the gap in the society. So for that purpose, it is said that teacher should focus on, first of all, for on himself or herself, because teacher is the catalyst of social transformation by spreading education to the marginalized section of the society, and we have 57% of students who are coming from disadvantaged group. So the role of a teacher become very important, because to make them so creative, so resourceful, that value integrity and diversity and are dedicated to the task of nation building. So in that way, there should not be a gap between the practice and preaching of a teacher. So the teacher should focus on ability, behavior, and character. Now the question arises that how to teach in a class, or which theory is the best which can give the good results in the teaching. So there are different learning style theories in uh, academics, and these different learning style theories are related to the the five senses, we can say, because they focus on, what's this, different learning style theories, because we all respond best to different learning style theory, and thus each focus on these different learning style theories focus on different senses, or we can say any one of the five senses, or involve the social aspect. We have five senses: sight, smell, hearing, taste, and touch. And these different learning style theories focus on one of the senses or the social aspect. So, as we all respond best to different learning style theory, so the teacher will have to decide at his or her own, that which learning style theory is to be adopted with which topic which he is going to, or which she is going to deal in a class. So the first learning style theory is, why this is done? So the first learning style theory is visual or the spatial learning style theory. And as it is clearly with the name of the learning style theory, that the sight sense is involved in this. So visual means retaining information best by viewing, means we retain best by viewing pictures, diagrams, images, and respond well to colors and mind maps. What we see, we retain it in a better way than what someone tell us or what we practice. So visual or the spatial learning style theory is the most popular learning style theory, and this learning style theory conveys that we retain information best by
viewing, and so this is up to teacher that which style is to be adopted for which topic. The second one is kinesthetic learning style theory. Kinesthetic means doing things physically, and for that purpose, uh, uh, the this learning style theory focuses on why this happens again and again. This learning style theory focuses on that we retain best by doing things physically. That's why it is said to do hands-on approach. In the science, they do practicals. Even in social sciences, also, we conduct the field-based activities, and for that, student learn better in that way. Here I want to give the example that if someone is learning surgery, doctors are learning surgery, and if they are visually or on the this YouTube channels, they are visualizing it. So it doesn't mean that they are capable of doing surgery. For that, they will have to do hands-on approach. और इसीलिए हम कहते हैं कि to establish as a physician is not so difficult, but to establish as a good surgeon is a challenging task, because for that hands-on approach is required, doing things physically is required. How consciously a surgeon or a doctor is doing surgery accounts in his or her विजडम. भाई अगर कोई सर्जरी यूट्यूब पे देख के सीख रहा है तो वो सर्जरी कर लेगा, ये संभव नहीं है. उसके लिए उसको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. इसको हम एक और अप्रोच से समझ सकते हैं कि क्या हम किसी को पानी में तैरते हुए देखकर हम स्विमिंग सीख सकते हैं? ऑफ कोर्स नॉट. फॉर दैट वी विल हैव टू जंप और गो इन अ पूल. तो जब तक हम खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक हम हैंड्स ऑन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक हम खुद हम नहीं सीख सकते. तो उस तरीके की लर्निंग के लिए हमें किनेस्थेटिक लर्निंग स्टाइल थ्योरी को अडॉप्ट करना है. अब ये टीचर के ऊपर है. इट इज अप टू टीचर दैट अकॉर्डिंग टू द टॉपिक which learning style theory is to be adopted to make the students learn about this. उसके बाद आता है थर्ड वन इज ओरल और ऑडिटरी लर्निंग स्टाइल थ्योरी. ओरल एज द वर्ड इज सजेस्टिंग, जिसके अंदर हम जो है ओरली जो है हम जिसको हम कहेंगे कि रिटेनिंग इंफॉर्मेशन बाय हियरिंग, यानी कि म्यूजिकल लर्नर है जैसे, या कोई कुछ बोलता है उसको सुन के हम उस चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं. दैट इज ओरल और ऑडिटरी लर्निंग स्टाइल थ्योरी. और म्यूजिकल लर्नर्स जो है वो इस चीज को प्रैक्टिस करते हैं. या स्टूडेंट्स भी कई सारे इश्यूज में इस तरीके की एक्टिविटीज को इस लर्निंग स्टाइल थ्योरी को यूज कर सकते हैं. तो ओरल और ऑडिटरी लर्निंग स्टाइल थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट. यूजुअली जो परफॉर्मिंग आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज को या जो है म्यूजिकल लर्नर्स जो है वो इस चीज को प्रैक्टिस करते हैं. समटाइम्स हम लोग अपने कुछ कॉन्सेप्ट्स को या कुछ चीजों को याद करने के लिए भी हम सुनते हैं और फिर उनको रिवाइज करके बार बार उनको बोल बोल के हम उनको याद करते हैं. और हर इंडिविजुअल किसी एक लर्निंग स्टाइल थ्योरी से स्टिक नहीं हो सकता. समहाउ उसको डिपेंड करता है कि वो किस थ्योरी में कंफर्टेबल है. तो हम किसी लर्निंग स्टाइल थ्योरी में ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं और किसी में उतना नहीं होते. बट डिपेंडिंग अपॉन द टॉपिक और अपॉन द कंसेप्ट व्हाट द टीचर इज टीचिंग, different learning style theories can be used. The next one is social or interpersonal learning style theory. Interpersonal learning style theory में यहाँ पर इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल्स के साथ जुड़ के ज्यादा बेहतर तरीके से कुछ चीजों को सीख पाते हैं. जैसे कि हम अगर
एक इंडिविजुअल कुछ चीज पढ़ रहा है, समझ रहा है, लेकिन अगर वही चीज वो एक स्टडी ग्रुप बनाकर करता है तो ज्यादा बेटर तरीके से उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। जैसे हम क्विज कॉम्पिटिशन्स कराते हैं, हम ग्रुप डिस्कशंस कराते हैं, तो वो सारा सोशल और इंटरपर्सनल लर्निंग स्टाइल थ्योरी में होगा। या फिर हम इस तरीके से भी कह सकते हैं जैसे कि सपोज करो हम कोई पर्टिकुलर टॉपिक सोसाइटी से रिलेटेड हम किसी चीज को पढ़ना चाह रहे हैं या समझना चाह रहे हैं, तो उसमें हम एक दूसरे के साथ शेयरिंग में या हम कहें कि इंटरपर्सनल डिस्कशंस में हम ज्यादा उस चीज को समझ पाते हैं। तो सोशल और इंटरपर्सनल लर्निंग स्टाइल थ्योरी, इसको भी हम अडॉप्ट कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट वन है दैट इज सोशल और इंट्रापर्सनल लर्निंग स्टाइल थ्योरी। मींस यहाँ पर जैसे कि सॉलिटरी और इंट्रापर्सनल लर्निंग स्टाइल थ्योरी, सॉलिटरी मींस अलोन, यानी कि एन इंडिविजुअल इज मोर comfortable in or the work best when he or she is alone, जिसमें कि हम लेते हैं कि हम नोट्स बना के पढ़ते हैं, हम जो नोट्स बनाते हैं उनको अकेले में रिसाइट करते हैं, बार बार पढ़ते हैं, तो दिस इज सॉलिटरी और इंट्रापर्सनल लर्निंग स्टाइल थ्योरी। और हम सब में से हम सब ने ही किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम में इन सब थ्योरीज को प्रैक्टिस किया है, यूज किया है। और सॉलिटरी और इंट्रापर्सनल लर्निंग स्टाइल थ्योरी को हम सभी प्रैक्टिस करते रहे हैं अपने एजुकेशन के समय भी और आज भी। नेक्स्ट वन इज वर्बल और लिंग्विस्टिक। इसमें यह है कि जो बोलना कैसे है, किस तरीके से प्रोनाउंसिएशन करना है, लैंग्वेज क्या कम्युनिकेट कर रही है, वो जो चीज है दैट इज वर्बल। जब हम बोल के, सुन के और उसी के अनुसार हम करते हैं। जैसे वर्बल और लिंग्विस्टिक में हम कहते हैं कि अगर फैमिली के अंदर जितनी लैंग्वेजेस बोली जा रही हैं तो बच्चा उनको सुनकर और उनको बोलकर उन लैंग्वेजेस को कंफर्टेबली सीख पाता है, बजाय उसके कि वो एक प्रॉपर मैनर में बैठ के उसको एक दिन में सीखने की कोशिश करें। द नेक्स्ट वन इज लॉजिकल। जैसे हम मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में फॉर्मूलाज और इक्वेशंस को डिराइव करने के लिए हम जो लॉजिक का यूज करते हैं दैट इज लॉजिकल लर्निंग स्टाइल थ्योरी। और ये भी कहीं ना कहीं काम जो है आती है हम सबकी लाइफ में, पर उतना हमारे उसमें नहीं चल पाता जितना कि ये फिजिक्स में, साइंस में, केमिस्ट्री में इनमें चलता है। तो ये डिफरेंट लर्निंग स्टाइल थ्योरीज हैं एंड दीज 7 लर्निंग स्टाइल थ्योरीज, ईच वन ऑफ देम इज इक्वली इंपॉर्टेंट डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ टॉपिक व्हाट द टीचर इज टीचिंग इन अ क्लास। टीचर उसमें से किसी भी लर्निंग स्टाइल थ्योरी को अडॉप्ट कर सकता है और ताकि बच्चे बेहतर तरीके से सीख पाए। इसीलिए टीचिंग के समय हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, मैप्स, डायग्राम्स, ओरल और ऑडिटरी शेयरिंग ऑफ आइडियाज। जैसे सपोज इफ आई एम टीचिंग, तो उस स्थिति में आई वुड लाइक टू इनवाइट tribal students because they are reciting, they know to the depth whatever written in the textbooks or the reference books. So sharing those ideas give more input, and with this sharing we grow with well as our students also learn, because higher education, teaching, learning and research, these 3 things move simultaneously. If the quality of research is poor, it means learning is poor, it means teaching is interrelated. So for a teacher, as a teachers, we have certain privileges also, because when we teach, we read, we learn, and for that it will contribute in our research also. Because while teaching, when we describe things, some new ideas or the new connections we draw among the topics what we are
teaching. So higher education is, Indian higher education system is the second largest system, which is complex body, and this growth is accompanied by increasing student diversity, and this, to address this diversity, we will have to adopt different learning style theories so that the students can learn in a well manner or the proper manner. Regarding this, in 1966, December 1966, United Nations, we all know United Nations is a international body or international organization which all the nation states, approximately all the nation states are members of United Nations. Few nation states who are not member, they are recognized as non-recognized territories such as Taiwan and few other countries, Ossetia and all. But most of the countries, they are member of the United Nations. In 1966, countries who are the member of the United Nations, in their General Assembly, they bring UN Covenant on Economic, Social and Cultural Right. And this United Nations Covenant on Economic, Social and Cultural Right, which was signed by the countries, this states that the state parties to the present covenant means International Covenant on Economic, Social and Cultural Right. इसमें एक आर्टिकल 13 ऐड किया गया इस कोवेनेंट में, और इसमें ये कहा गया द स्टेट पार्टीज टू द प्रेजेंट कोवेनेंट रिकॉग्नाइज द राइट ऑफ एवरीवन टू एजुकेशन. They agree that education shall be directed to the full development of the human personality and the sense of its dignity, and shall strengthen the respect for human rights and fundamental freedom. Means this was that education is the right of everyone. It means if we are dividing someone from education, अगर हम किसी को भी शिक्षा से वंचित कर रहे हैं तो हम उसके अधिकार से उसको वंचित कर रहे हैं, उसके मानव अधिकार से उसको वंचित कर रहे हैं, क्योंकि शिक्षा का अधिकार उसको डिग्निटी के साथ, उसको एक सबल तरीके से समाज में जीने के लिए, उसकी पर्सनालिटी की ग्रोथ के लिए, उसके फंडामेंटल फ्रीडम्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है. तो ये जो इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट, जो कि 1966 में जिन भी स्टेट पार्टीज ने साइन किया था, उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि everyone has a right to education, and education shall be directed to the full development of human personality and the sense of its dignity, and shall strengthen the respect for human rights and fundamental freedom. Means education ऐसी होनी चाहिए, education shall be directed to the full development of human personality. और तभी से जो इंटरनेशनल सिनेरियो में रिकॉग्नाइज किया गया, उसके बाद में परकुलेट होते हुए डिफरेंट नेशन स्टेट्स में गया, और आज की तारीख में जो काफी लंबे टाइम से हम बात कर रहे हैं, सोसाइटी में चल रहा है कि एजुकेशन इज ऑल राउंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल. ऑल राउंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल से मतलब है कि केवल पर्सनालिटी के एक ट्रेट या एक एस्पेक्ट को नहीं, उस इंडिविजुअल की पूरी ग्रोथ से रिलेटेड है एजुकेशन. तो एजुकेशन इज एन इम्पॉर्टेंट राइट ऑफ एन इंडिविजुअल, और इसी के रेफरेंस में राइट टू एजुकेशन हमारे यहाँ 86th अमेंडमेंट जो आया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 2002 में, उसमें ये बात कही गई कि राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट. और तब से ही ये जो है 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए एजुकेशन का राइट जो है वो उसका फंडामेंटल राइट हो गया, यानी कि उसके ह्यूमन राइट्स में जुड़ गया है. इसी को कंटिन्यू करने के लिए, इसी को सपोर्ट करने के लिए, जब 6 से 14 साल तक के बच्चे जैसे जो स्कूल नहीं आ रहे हैं, तो क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि यही स्टेप बाद में
जो स्कूल लेवल पे एंटर होता है, बाद में उन्हीं में से हायर एजुकेशन में जाता है। तो बहुत सारा पोटेंशियल हमारे जो कैपिटल है, हमारी जो नई जनरेशन हमारे लिए एक बहुत बड़ा सोर्स है हमारे नेशनल पावर का। तो उसके लिए जो बच्चे नहीं आ रहे हैं स्कूल में, तो क्यों नहीं आ रहे हैं, तब से ही सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील और बहुत सारी ऐसी एजुकेशन जिसमें फेलोशिप्स, स्कॉलरशिप्स, हायर एजुकेशन में फेलोशिप्स, रिसर्च के लिए जो फेलोशिप्स हैं, उसके अलावा कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम जिसमें स्टूडेंट्स एक कंट्री से दूसरे कंट्री या दो देशों के बीच में जो वो होता है MOU साइन, जिसमें कि भाई इतने स्टूडेंट्स आपके देश के हमारे देश में पढ़ने आएंगे और हमारे देश के दूसरे देश में पढ़ने के लिए जाएंगे। तो इस तरीके की चीजों को प्रमोट किया जाने लगा, बिकॉज एजुकेशन इज द फंडामेंटल राइट ऑफ एन इंडिविजुअल, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसको आर्टिकल 21A में इसको शामिल किया गया है। उसके बाद जो है इस तरीके से ये 2009 में जो है ये एक राइट टू एजुकेशन एक्ट भी आया, और इसको फुल फ्लैश्ड एक वो जो है जिसको कहेंगे कि लीगल इसको सेंटिटी मिली। तो तब से ही फिर चाइल्ड लेबर बैन हुआ, उस पर एक्शंस लिए जाने लगे। तो एजुकेशन इज द फंडामेंटल राइट ऑफ एन इंडिविजुअल। एज बीइंग अ टीचर, अगर हम किसी को उसकी अगर हम उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में उसको हेल्प कर रहे हैं, इट मीन्स हम उसके ह्यूमन राइट को, उसके फंडामेंटल राइट को उसको प्रमोट कर रहे हैं, उसको असिस्ट कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगी कि जो टैक्स पेयर्स का पैसा है, वो टैक्स पेयर का पैसा इंस्टीट्यूशंस को स्टैब्लिश करने में और उनको खड़ा करने में लगाया जाता है। और दैट इज कि भाई सोसाइटी से अगर आप ले रहे हैं तो यू विल हैव टू रिटर्न इट बैक टू द सोसाइटी। यानी कि ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि एजुकेटेड व्यक्ति जो है नेशन बिल्डिंग में कंट्रीब्यूट करेगा, सोसाइटी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करेगा। The role of a teacher in that scenario become very very important। एक और क्वेश्चन यहाँ अराइज होता है कि इंक्लूसिव एजुकेशन जो हम डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं, वो तो हमें समझ में आ रहा है कि भाई डाइवर्जेंट सोशो कल्चरल बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स आ रहे हैं, एनरोल हो रहे हैं, और 57% जो है वो मार्जिनलाइज सेक्शन से हायर एजुकेशन में आ रहे हैं। लेकिन जो इंक्लूसिव एजुकेशन है उससे क्या मतलब है? इंक्लूसिव एजुकेशन से जो मीनिंग निकलता है वो ये आता है कि बीइंग अ टीचर, एज अ टीचर वी शुड प्रोवाइड एजुकेशन टू ऑल स्टूडेंट्स इन क्लास। और ऑब्वियसली हम जो लेक्चर डिलीवर करते हैं वो सभी सुनते हैं, लेकिन यहाँ पर जो इसका स्पेशल मीनिंग है वो ये है कि टीचर शुड प्रोवाइड एजुकेशन टू ऑल स्टूडेंट रिगार्डलेस ऑफ एनी परसीव्ड डिफरेंस, disability or other social, cultural or linguistic difference। It means जो 57% डिसएडवांटेज ग्रुप से जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं हायर एजुकेशन में, उनकी डाइवर्स नीड्स है, और इन डाइवर्स नीड्स जो लर्नर्स की डाइवर्स नीड है, इस क्वेस्ट को हम पूरा कैसे कर पाएंगे? तो डाइवर्स नीड ऑफ दीज लर्नर्स एंड क्वेस्ट टू मेक इंस्टीट्यूशंस more learning friendly require teacher to collaborate with one another, and for that purpose it is said that कि multidisciplinary approach को प्रमोट किया जाए, academic integrity को प्रमोट किया जाए, inclusive education के लिए ये सारे efforts कि भाई being a teacher हम इतने संवेदनशील बने कि जो बच्चा स्लो लर्नर है, जिस बच्चे को कोई दूसरी इश्यूज हैं, जो फिजिकली चैलेंज है या कोई और डिसेबिलिटी है, हम उनको भी हायर एजुकेशन सिस्टम में अकोमोडेट कर सके। क्योंकि हायर एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया इज नो लॉन्गर अ सिंबल ऑफ सोशल स्टेटस। हायर एजुकेशन इज नॉट ओनली कन्फाइंड टू सेलिंग और नॉट कन्फाइंड टू सेटिंग जॉब्स ओनली। आज की तारीख में हायर एजुकेशन को केवल हम गेटिंग जॉब से रिलेट या
केवल जॉब्स पाने से रिलेट नहीं कर सकते। हमारे यहाँ आज की तारीख में मोर देन 1043 यूनिवर्सिटीज हैं अकॉर्डिंग टू द ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2020, और लगभग 15 लाख के अबव टीचर्स हैं जो कि हायर एजुकेशन सिस्टम में कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। तो इतना बड़ा एक लार्ज और कॉम्प्लेक्स जो सिस्टम है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को मैनेज करने के लिए इंक्लूसिव स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट करना पड़ेगा, एंड फॉर दैट पर्पस द रोल ऑफ अ टीचर बिकम्स very important, and teachers play a vital role in all-round personality development of an individual. In this regard, I would like to say one thing कि चाहे हम किसी भी प्रोफेशनल से मिले, चाहे किसी भी इंडिविजुअल से मिले, चाहे वो आर्मी पर्सनल हो, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे इंजीनियर्स हो, चाहे साइंटिस्ट हो, चाहे शॉपकीपर्स हो, कोई भी व्यक्ति हो जो जिसने एजुकेशन ली है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं टीचर का रोल रहा है. If that person is literate, it means some teacher has played a role behind his or her personality's growth. उसकी पर्सनालिटी की ग्रोथ में एक टीचर किसी स्टूडेंट की जो कि स्लो लर्नर है, उसकी लाइफ में भी मैजिकल चेंजेस ला सकता है by dealing or by tackling that issue sensitively. लेकिन on the other side, a teacher can a negative thought of a teacher can ruin the life of a student also. What we have observed that कि भाई teacher play a vital role in all round personality development of an individual. Even we all on this virtual platform, we are from different streams. Some may be from science, some may be from commerce, some may be from social sciences or applied sciences. हम सब भी अगर देखें तो चाहे हम माने या ना माने, लेकिन there is role of some teacher on influence, rather I would like to say influence of some teacher on our personality, कि वो हमको यहाँ तक लेकर आए कि हम हायर एजुकेशन में मूव कर पाए. हम किसी ना किसी से इन्फ्लुएंस हुए या किसी ना किसी ने अपने थॉट प्रोसेस से, अपने विजडम से हमको इन्फ्लुएंस किया और हम हायर एजुकेशन में मूव करें. तो टीचर का रोल केवल लेक्चर डिलीवर करना या अपने रिसर्च पेपर लिखने तक ही सीमित नहीं है. टीचर इज टीचर व्हेन द टीचर इज मूविंग इन अ सोसाइटी और डीलिंग विद हिज और हर colleagues और dealing with students or dealing with non-teaching staff. So the role of a teacher is very important. Teachers play a vital role in all-round personality development of the students. और आप इस चीज को ऑब्जर्व करेंगे, आप कभी देखिएगा कि जो नॉन टीचिंग स्टाफ हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में है और जो नॉन टीचिंग स्टाफ किसी दूसरे इंस्टीट्यूशंस में काम कर रहे हैं, तो आप देखेंगे उनके बिहेवियरल पैटर्न में डिफरेंस कहीं ना कहीं हम ऑब्जर्व करते हैं. बिकॉज टीचर्स का इन्फ्लुएंस उनकी वे ऑफ वर्किंग का, उनकी वे ऑफ थिंकिंग का, और एज अ टीचर वी ऑल्सो हैव सर्टेन प्रिविलेजेस. बिकॉज हम लोग एज अ टीचर व्हेन वी एंटर इन अ क्लास, इट्स आवर प्रिविलेज दैट इन व्हाट वे, with which learning style theory I am teaching in my class. टीचर क्लास में जाने के बाद बैठ के पढ़ा रहा है, खड़े होके पढ़ा रहा है, डायलेक्टिकल मेथड में पढ़ा रहा है, या व्हाइट बोर्ड से पढ़ा रहा है, या फिर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से पढ़ा रहा है, या चौक और बोर्ड से पढ़ा रहा है, वो उसके ऊपर ऑटोनॉमी है, वो कैसे कर रहा है. तो टीचर का इन्फ्लुएंस, इम्पैक्ट सोसाइटी में बहुत जबरदस्त है, जो हमें डायरेक्टली दिखता नहीं है, लेकिन कोलैबोरेटिवली वो निकल कर आता है. टीचर जिन लोगों को हम आज ग्रूम कर रहे हैं,
जिनको हम आज तैयार कर रहे हैं, 2, 5, 8 साल बाद वो सोसाइटी में रोल प्ले करते हैं। और इसलिए टीचर का रोल बहुत क्रूशियल है, एंड बिकॉज ऑफ दिस टीचर्स अपीयर्स फिजिकली फ्री बट मेंटली ऑलवेज दे आर ऑक्यूपाइड। कहीं ना कहीं हम सोच रहे होते हैं कि आगे क्या करना है, क्योंकि ये जो वर्किंग ऑफ माइंड को आप जज नहीं कर सकते। अगर आप फिजिकली कुछ काम कर रहे हैं तो वो तो आपको विजुअलाइज होगा, दिखेगा आपको, दूसरों को भी दिखेगा, लेकिन मेंटल वर्क को आप कैसे, मेंटल लेबर को आप कैसे शो कर सकते हैं? दैट रिफ्लेक्ट्स थ्रू आवर इम्पैक्ट ऑन द स्टूडेंट एंड फाइनली एंड अल्टीमेटली इन दी सोसाइटी। तो टीचर का रोल स्टूडेंट की पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बहुत मेजर रोल प्ले करता है। उसके अलावा टीचर केवल स्टूडेंट के किसी एक एस्पेक्ट को ही नहीं, टीचर स्टूडेंट के लिए गाइड भी है, मोटिवेटर भी है, फ्रेंड भी है। सो देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन द फ्रेंडलीनेस एंड फर्मलीनेस बिटवीन द टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप। अगर टीचर बहुत ज्यादा फर्म होगा, रिजिड होगा, नए आइडियाज को लेकर वो कंफर्टेबल नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो उसकी जो फर्मनेस है वो स्टूडेंट्स को ओपन अप नहीं करेगी। स्टूडेंट्स आर नॉट रेडी टू शेयर देयर आइडियाज। दूसरी ओर टीचर अगर बहुत ज्यादा फ्रेंड मोड में है स्टूडेंट्स के साथ, growth and developing their innate potential in addition to being a motivator, guide or a friend। और इसीलिए टीचर्स और स्टूडेंट के बीच के रिलेशन को एक हेल्दी रिलेशन माना गया है, उस तरीके से जब हम दोनों तरफ से एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, और दोनों तरफ से एक्टिव पार्टिसिपेशन हो, इसके लिए रोल प्ले करना है टीचर को, ताकि हम अपनी बात कहें, स्टूडेंट्स भी अपने आइडियाज शेयर करें। बिकॉज जो एनर्जी यूथ में है, नई जनरेशन में है, विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारी एनर्जी थोड़ी लो होती है। उस लो एनर्जी को हाई में कन्वर्ट करने के लिए शेयरिंग ऑफ आइडियाज वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसीलिए इन टीचिंग प्रोफेशन हम बाय चॉइस or by force, we anyway in both way we grow with the passage of time। हमको हमेशा नई जनरेशन के टच में रहना है। तो अगर हम आज कोई डेवलपमेंट है उसको नहीं समझ रहे हैं, तो हम ही बीइंग अ टीचर, हम ऐसा नहीं है कि ऑटोमेटिकली चलते चले जाएंगे, लेकिन हमको भी उस चीज को पकड़ना पड़ना है, समझना पड़ना है। तभी जो है टीचर्स जो है स्टूडेंट की लाइफ से लाइफ को इन्फ्लुएंस कर पाते हैं। तो देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन द फ्रेंडलीनेस एंड फर्मनेस बिटवीन द स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप। और इसीलिए टीचर के लिए कहा जाता है कि अब जो डाइवर्जेंट सोशल कल्चरल बैकग्राउंड के, जो डाइवर्जेंट बैकग्राउंड से जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, कि we will have to learn them how to think rather than what to think। because हम लोगों का समय और जो नई जनरेशन आ रही है उसमें चेंजेस समय के साथ आते हैं। now everything can't be teacher centric no more, it's learner centric learning, and for that learner centric learning, one more word, full mode of learning is used। and for that we will have to design our strategy of teaching keeping in view of the students की नीड को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी टीचिंग स्ट्रेटेजी को डिजाइन करना पड़ेगा। और इस टीचिंग स्ट्रेटेजी को डिजाइन कैसे करना है, हमने टीचिंग स्ट्रेटेजी क्या प्लान करनी है, वो डिपेंड करता है कि टॉपिक क्या हम पढ़ाने जा रहे हैं, उसको हम कैसे इंटरेस्टिंग बना सकते हैं अपनी क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, कैसे हम
स्टूडेंट्स को ज्यादा से ज्यादा और बेटर तरीके से अपने साथ उनको कनेक्ट कर सकते हैं। तो रोल ऑफ अ टीचर इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज we have students with divergent socio-cultural background. We have students from marginalized communities. We have students with special educational needs. We have students with learning difficulties. We have students with extraordinary abilities. So we will have to design inclusive strategies for meeting the needs of all types of students. And in that aspect, the role of a teacher is very important, and a teacher is responsible to enable and empower the learner to emerge as a competent youth ready to take on challenges of the rapidly changing world. आज की तारीख में हम देखते हैं कि बहुत बार जिस तरीके की न्यूज हमको सुनने को पढ़ने को मिलती है कि कई बार ऐसा लगता है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति वो नासमझी कर रहा है जो कि नहीं करनी चाहिए। तो नाउअडेज ह्यूमन को ह्यूमन बनाए रखने के लिए, उसकी सेंसिटिविटी को मेंटेन रखने के लिए टीचर का रोल इम्पोर्टेंट हो गया। बिकॉज जो इंफॉर्मेशन गूगल के पास है, जो इंफॉर्मेशन हमारे छोटे से डिवाइस मोबाइल फोन में है, उससे ज्यादा इंफॉर्मेशन तो हम अपने दिमाग में नहीं रख सकते। लेकिन इवन आफ्टर दैट द रोल thousands and thousands of computers can't beat a single good teacher. So for effective learning, we will have to design strategies. We will have to think over the time management. There should be use of humor. There should be balance between friendliness and firmness. There should be mentoring from the teacher's side also. There should be proper assessment and evaluation by the teacher. So for that, effective lesson planning is an essential aspect, and for that the role of a teacher is very, very important, very crucial. Second thing is, if the quality of teaching is good and the commitment of teacher is high, the standard of the institution is bound to rise, because institutions are not because of the buildings, because of the infrastructures or whatever resources they have. Institutions are built by the teachers and the students. Institutions students और teachers से मिलके ही बनते हैं। उनकी contribution से उनकी growth होती है institutions की। Because of this, there are number of institutions who have spent lakhs of monies to establish them, but even after that, due to very low number of students, वहां पर उस तरीके से उन institutions की growth नहीं हो पाई है। So the role of a teacher is very, very important in the personality development of an individual. आज की तारीख में अगर हम देखें तो जो हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है, उन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को जिनकी की अभी हम बात करें कि मोर देन 1043 इंस्टीट्यूशंस 2020 के डेटा के अकॉर्डिंग है, यानी कि ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन के अकॉर्डिंग जो है 1043 इंस्टीट्यूशंस है। लेकिन इन इंस्टीट्यूशंस को भी हमने क्लासिफाई किया हुआ है कुछ ग्रुप्स में, जैसे कि स्टेट यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज। जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज स्टेट्स में है, कुछ स्टेट्स में मोर देन वन सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है। स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं स्टेट्स में जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज से भी पुराने स्टैब्लिशमेंट और सेटअप है। कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, प्रेस्टिजियस हैं, जैसे कि बिट्स पिलानी है। उसके अलावा डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी में हम जैसे सिम्बायोसिस इंटरनेशनल एजुकेशन सेंटर को लेते हैं, जैसे हम मणिपाल यूनिवर्सिटी को भी लेते हैं। इसलिए इंस्टीट्यूशंस की क्लासिफिकेशन है, बट डाइवर्सिटी ऑफ स्टूडेंट, डाइवर्जेंट ग्रुप्स के स्टूडेंट्स, डिफरेंट सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड के स्टूडेंट हर इंस्टीट्यूशंस में मिलेंगे। और इसी के रेफरेंस में विंस्टन चर्चिल ने एक बार ये बात कही थी कि हेडमास्टर्स हैव पावर at their disposal
with which Prime Minister have never yet been invested. जो स्कूल का हेडमास्टर होता है उसकी पावर कहीं ज्यादा है, बिकॉज जो बच्चा उसके पास आ रहा है उसके माइंड को वो शेप कर रहा है, उसके माइंड को वो डिजाइन कर रहा है. इसलिए द रोल ऑफ अ टीचर इज वेरी इंपॉर्टेंट in the society. So teacher's role is very important. Now the question arises that what we mean by academic integrity. Academic integrity जिसकी बात अभी पीछे मैंने यूज किया था ये वर्ड, academic integrity से क्या मतलब है, हम क्या कहना चाहते हैं academic integrity के रेफरेंस में. तो academic integrity की अगर हम बात करें तो बेसिकली एकेडमिक इंटीग्रिटी जो है, अगर हम देखें मींस, अगर वर्ड इसकी डेफिनेशन के टर्म में देखें तो मींस पुटिंग दोज वैल्यूज इनटू प्रैक्टिस बाय बीइंग ऑनेस्ट इन द एकेडमिक वर्क वी डू एट आवर वर्क प्लेस. जो हम अपने काम की जगह, हमने हमारे कॉलेजेस में, हमारे यूनिवर्सिटीज में काम करते समय जो हम अपना एक ऑनेस्ट प्रैक्टिस जो हम करते हैं, अपनी वैल्यूज को जो हम प्रैक्टिस करते हैं उसके रेफरेंस में एकेडमिक इंटीग्रिटी. अगर हम अपने इंडियन हायर एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो इंडियन से हायर एजुकेशन सिस्टम जो इतना स्ट्रॉन्ग था कि आज भी हमारा सोशल साइंस कहीं ज्यादा मजबूत है, सोसाइटी में हमें देखने को मिलता है. Although with the passage of time, due to cutting edge technology, we find some black spots in this social science arena, but even after that जो हमारी सोसाइटी है, इंडियन ट्रेडिशनल सोसाइटीज का जो वैल्यू सिस्टम है, जो कल्चरल सिस्टम है, दैट इज वेरी मच स्ट्रॉन्ग. तो एकेडमिक इंटीग्रिटी की जब हम बात करते हैं तो एकेडमिक इंटीग्रिटी की जिन वैल्यूज को अब आगे स्टैब्लिश किया गया वो हमारे माइंड सेट में, हमारी प्रैक्टिस में सिंस टाइम बैक, टाइम अगो, वो काफी पीछे से हमारे साथ चली हुई है. तो एकेडमिक इंटीग्रिटी की अगर हम बात करते हैं तो एक इंटरनेशनल सेंटर फॉर एकेडमिक इंटीग्रिटी जो है वो 1992 में क्लेमसन यूनिवर्सिटी जो साउथ कैरोलिना यूएस में है, वहां एक स्टैब्लिश किया गया. क्योंकि आपने देखा होगा कि यूरोप में और यूएस में वहां का कल्चर कुछ अलग तरीके का है, और उनको ये इंटरनेशनल सेंटर फॉर एकेडमिक इंटीग्रिटी स्टैब्लिश करना पड़ा. बिकॉज जिस तरीके से शूट आउट्स हो रहे थे, छोटे छोटे बच्चे स्कूल्स में पिस्टल्स और रिवॉल्वर्स लेके जा रहे हैं, जिस तरीके से वो स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने की बात करते हैं अपने हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, उस रेफरेंस में तो उन्होंने 1992 में इंटरनेशनल सेंटर फॉर एकेडमिक इंटीग्रिटी क्लेमसन यूनिवर्सिटी कैरोलिना में स्टैब्लिश किया गया. इस इंस्टीट्यूशन ने बेसिकली, ये इंस्टीट्यूशंस 1992 में आया और इस इंस्टीट्यूशन ने एक फोरम स्टैब्लिश किया जो कि ये आइडेंटिफाई करेगा कि भाई कि प्रमोट करने के लिए, वैल्यूज को प्रमोट करने के लिए, वैल्यूज बिटवीन द स्टूडेंट्स, फैकल्टी, teachers and administrators, because teachers are administrators also of their institute. They play different administrative roles in their institutions also, such as dean, proctors, ds, pro vc, vice chancellors, wardens. All these administrative roles they play from time to time as a chairperson, director, deans. So यहाँ पर इन्होंने 1992 में जो इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश किया उसने कुछ वैल्यूज को आइडेंटिफाई किया. जो उसका पर्पस था, द पर्पस इज टू फॉस्टर एंड अपहोल्ड हाई स्टैंडर्ड ऑफ एकेडमिक इंटीग्रिटी, और इसका मिशन जो था इज टू प्रोवाइड रिसोर्स एंड कैटलाइज कमिटमेंट टू एकेडमिक इंटीग्रिटी इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एकेडमिक इंटीग्रिटी की बात करते हुए, जो कंक्लूड करते हुए ये कहते हैं, हम अपने पार्ट पर भी ये बात को देखते हैं कि योर इंटीग्रिटी मीन्स एज अ टीचर वी आर सेइंग कि योर इंटीग्रिटी, हम खुद अपने आप में भी, हमारे लिए भी है कि आवर इंटीग्रिटी इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ हु वी आर. हमारी
इंटीग्रिटी जो है वो इम्पोर्टेंट है, important part of who we are, and once we compromise it, it is hard to get it back. एक बार अगर as a teacher, if we compromise with our academic integrity, it is hard to get it back. So academic integrity is an important aspect. As a teacher, keeping in view the importance, significance, and relevance of academic integrity, it is considered as an important aspect of discussion over in different induction programs and in different courses also, because academic integrity should be developed in ways that are both positive and pragmatic. एकेडमिक इंटीग्रिटी की अगर हम बात करें, जो 1992 में जो सेंटर स्टैब्लिश किया गया, उस 1992 के सेंटर ने कुछ एकेडमिक इंटीग्रिटी के वैल्यूज को जो है वो वैल्यूज की बात की। उन एकेडमिक इंटीग्रिटी के जो वैल्यूज हैं, उन वैल्यूज में सबसे पहली जो वैल्यू आती है दैट इज ऑनेस्टी, सेकंड इज ट्रस्ट, थर्ड इज फेयरनेस, then respect, then responsibility, and one more value which was added in 2014. This sixth value is courage. It means 1992 में सेंटर स्टैब्लिश हुआ, 1999 में आफ्टर 7 years उसने कुछ वैल्यूज को प्रमोट करने की बात की। उन वैल्यूज में ऑनेस्टी, ट्रस्ट, फेयरनेस, रेस्पेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन वैल्यूज की प्रमोट करने की बात की। और 2014 में वन मोर वैल्यू विच दे हैव एडेड इज करेज। तो अगर हम अपनी सिस्टम की बात करें, इंडियन हायर एजुकेशन सिस्टम, अगर हम अपने एंशियंट इंडियन सिस्टम की बात करें तो ऑनेस्टी, ट्रस्ट, फेयरनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पेक्ट, करेज, ये सारी वैल्यूज तो हमारे वर्किंग में, हमारे डीएनए आरएनए में इनिशियली है, बट ड्यू टू सर्टेन एपिसोड्स इन चीजों को दोबारा से रिवाइज करने की बात कही गई, इनको दोबारा से प्रमोट करने की बात कही गई। और इसी रेफरेंस में अगर हम देखें, हमारा इंडियन हायर एजुकेशन सिस्टम इज different, our values in terms of values I'm talking about, in terms of values our system is more value oriented, because हम लोगों के सिस्टम में since time immemorial ये चीजें आ चुकी हैं कि भाई as a teacher we should be fair, we should be honest, we should be trustworthy, we should be respectful, we should be responsible and courageous also. Because if some wrongdoing is going in a society, as a teacher, we should have that much of courage so that we can speak out when it is needed. So, APJ Abdul Kalam has said once that if a country is to be corruption-free and become a nation of beautiful minds, I strongly feel there are 3 key societal members who can make a difference. They are father, the mother, and the teacher. So the parents are at equal pedestal with the teachers are at equal pedestal with the parents of the student or parents of the child. So for that way, the prize, as it is common saying, responsibility. So as a teacher, we will have to bear that responsibility. As a teacher, we will have to live like a hermit and work like a horse. So it is very important. अगर हम इन वैल्यूज की बात करें तो इससे पहले एक और एग्जांपल देने चाहूंगी मैं। इन जर्मनी, टीचर्स हैव द हाईएस्ट सैलरी इन द कंट्री, एंड व्हेन जजेस, डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स आस्क्ड द जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल for the same salary what the teachers are getting, and when they talked about the same salary as of that of teacher, then the Angela Merkel has said that how can I compare you to those who taught you. मैं जो जवाब है इट्स रियली वेरी ब्यूटीफुल कि हाउ कैन आई कंपेयर यू टू दोज हु टॉट यू। जो भी हम पहले भी बात कर रहे थे कि चाहे कोई
आर्मी पर्सनल हो, चाहे कोई क्लर्क हो, चाहे कोई इंजीनियर हो, चाहे कोई डॉक्टर हो, चाहे कोई अकाउंटेंट हो, चाहे सीए हो, चाहे सीएस हो, चाहे कोई और प्रोफेशनल हो, चाहे मल्टीनेशनल कंपनीज में वर्किंग एम्प्लॉयज हो, वहां के हर किसी के पीछे कोई ना कोई टीचर या नंबर ऑफ टीचर्स का रोल होता है. तो एंगेला मर्कल व्हेन द doctors, engineers and judges asked for the same salary as the teachers are getting, then she said that how can I compare you to those who taught you? जिन्होंने आपको पढ़ाया है हम उनसे कैसे कंपेयर कर सकते हैं. इसी रेफरेंस में एज अ टीचर व्हाट वी डू टीचिंग, isn't it? So हम टीचिंग करते हैं और टीचिंग वर्ड इज एसोसिएटेड विद whom? We usually associate the word teaching with teachings of Guru Nanak Dev, teachings of Lord Krishna, teachings of Prophet Muhammad, teachings of Guru Tegh Bahadur Singh, teachings of Lord Rama, teachings of other gurus and all. So the word teaching is associated with so big personalities. We will have to always focus on this fact that we as a teacher, we are teaching. To be a teacher is a matter of pride. We have certain privileges as a teacher, as I have said earlier also, and these privileges are not for enjoyment. These privileges are associated with certain responsibilities also. As a teacher, we are always in touch with new generation. We have liberty to teach according to our convenience, or through which learning style theory, or as we wish. We can teach according to that. Teaching is linked with learning. So as a teacher, we grow with the time in our profession. हम अपने profession में भी समय के साथ grow करते हैं. तो इसलिए the word teacher is associated with us. Our teaching is important because it is shaping the future generation, and for that purpose, the relationship between the teacher and the student, or the relationship between the supervisor or the scholar, is very very important. And सबसे पहली बात तो as a teacher we will have to communicate to our students that being a teacher, we are not only indulge in teaching, we have other responsibilities also, including the designing of timetable, including the filling of NAAC criteria, including of administrative responsibilities, even the sanctioning of the plan of some building and all. At every step, the role of a teacher is involved. So the role of a teacher is very very important. But I don't know how the message traveled in a society that the teachers, oh, to be a teacher is very easy, it's very comfortable. But when we become a teacher, we find it that to be a good teacher is not so easy task, because at every time, in every way, we will have to think over that how, in what way, in better manner we can communicate or transmit our knowledge to the society. So the role of a teacher is very very important, and the values of academic integrity are honesty, trust, fairness, respect, responsibility and courage. Honesty से मतलब है कि जहां जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी हम करते हैं, उसमें हम that should be free from fraud or deception. एक लेजिटिमेट तरीके से हम काम करें, चाहे हम क्लासरूम में हो, चाहे लेबोरेटरीज में हो, चाहे प्लेग्राउंड्स में हो, या कॉन्फ्रेंस हॉल्स में हो, कहीं भी हो. ऑनेस्टी लेज द फाउंडेशन ऑफ लाइफ लॉन्ग इंटीग्रिटी. अगर हम ऑनेस्ट हैं तो कहीं ना कहीं वो लाइफ लॉन्ग इंटीग्रिटी के साथ जुड़ता है. इंस्टीट्यूशंस also must commit to become
honest with institutions, faculty, staff supports and broader communities में ये चीज फिर spread होती है. Honesty at organizational level set the tone for the overall academic endeavor. So honesty is an important aspect. Second thing is trust. Trust enables students and researchers to collaborate, share information, and to circulate new ideas freely without any fear. So trust is a reciprocal kind of thing. Being worthy of others' trust and allowing oneself to trust others go hand in hand. और इस चीज को हम देखते हैं कि अगर हम किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे तो दूसरा भी हम पे नहीं करता है. तो ट्रस्ट इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट. नेक्स्ट इज फेयरनेस. मीन्स फेयर और इम्पार्शियल ट्रीटमेंट. कहीं ना कहीं जो हम अनजाने में कई बार समटाइम्स अननोइंगली कुछ किसी की तरफ फेवरेटिज्म हो जाता है या किसी के लिए हम इम्पार्शियल नहीं रह पाते. तो ये चीज जो है हमको टैकल करनी पड़ेगी. और फेयरनेस में मेनली यही बात है, टू रिमेन इम्पार्शियल, लैक ऑफ फेवरेटिज्म टुवर्ड्स वन साइड और द अदर. और एकेडमिक कम्युनिटी में इंक्लूडिंग फैकल्टी, स्टूडेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, स्टाफ मेंबर्स have a right to respect fair treatment and a duty to be fairly also. So regarding this, rules and policies consistently keep an open mind, be objective, take responsibility of your own actions. जो हम करते हैं उसके लिए हम ही accountable हैं. थर्ड थिंग इज रेस्पेक्ट. रेस्पेक्ट की अगर हम इस वैल्यू की अगर हम बात करें तो एकेडमिक कम्युनिटीज में रेस्पेक्ट इज अ रेसिप्रोकल काइंड ऑफ थिंग. शोइंग रेस्पेक्ट फॉर वन सेल्फ एज वेल एज अदर्स. रेस्पेक्ट फॉर सेल्फ मीन्स टैकलिंग चैलेंजेस विदाउट compromising with our own values. तो रेस्पेक्ट के लिए हम we will have to practice active listening and receive feedback willingly. So this is an important value. And with this, responsibility is also an important aspect. Responsibility के reference में हम करेंगे इसको हम explain करने के लिए कह सकते हैं कि being responsible means standing up against the wrongdoing or resisting negative peer pressure and serving as a positive example in a society. So responsible individuals hold themselves accountable for their own action. So we all are responsible. We all are accountable for our own actions. We should know and follow the institutional rules and conduct, code of conduct. हमें जो सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं उसके कोर्स आउटकम क्या है, उसके लर्निंग आउटकम्स क्या हैं, उसका हमको एक एक एस्पेक्ट क्लियर होना चाहिए. एंड दिस इज व्हाट रेस्पॉन्सिबिलिटी is on our shoulders when we teach in a class. And the next one is that is courage. This value was added in 2014. And this courage by being a teacher, अगर हम कोई wrong doing कुछ गलत होते देख रहे हैं लेकिन हमें वो साहस नहीं है कि हम उस रॉन्ग डूइंग के खिलाफ आवाज उठा पाए तो इट मीन्स वी आर नॉट करेजियस. इसीलिए बीइंग अ टीचर अगर कुछ गलत होता है तो इट्स ऑन आवर पार्ट कि हम उस चीज के लिए आवाज उठाएं. अगर कुछ गलत हो रहा है तो हम उसके लिए बोल सके. तो इसलिए टू क्रिएट अ कल्चर ऑफ एकेडमिक इंटीग्रिटी एट इंस्टीट्यूशनल लेवल as well as in the department level is an important aspect. और academic integrity के दो aspect है फिर, एक academic integrity at practice and at institution. ये जो values हैं तो ये हमारे अंदर में ये बात आई थी कि भाई हमें on campus partnerships को हैं academic dishonesty के लिए उनको curtail भी किया गया to reduce